सबसे ज़्यादा खतरनाक तूफ़ानी बारिश में ये शादी का ब्लॉग है, तो पूरा ज़रूर देखें। सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है अब इस ब्लॉग में आज। ओके गाइस। हर जगह पानी ही पानी भर चुका है, सब कुछ तहस नहस हो चुका है इस समय बिल्कुल ही। फिर भी वरमाला करेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पाल परिवार में आपका स्वागत है। और आज मैं जा रहा हूँ, मेरे एक कज़न ब्रदर की शादी है। एक्चुअली कार हो गई ख़राब, तो मैं ऑटो से जा रहा हूँ। ये रहा मेरा हेलमेट, क्योंकि वहाँ से मैं बाइक से लौट के आऊँगा। तो आप इस ब्लॉग को पूरा एंजॉय कीजिए, शादी का फुल मज़ा इस ब्लॉग में। गाइस, आज भाई की लगन है और कल बारात जाएगी, तो मैं आपको लगन से लेके पूरी बारात के जाने और लौट के आने तक का पूरा फुल वीडियो दूँगा। कोई भी चीज़ मिस मत करना, क्योंकि ये बारात होने वाली है सबको यादगार, बहुत ही स्पेशल धाकड़ बारात। तो इस समय बैंक्वेट हॉल में ये भाई की लगन चल रही है, आप देख सकते हैं। इस समय मैंने थोड़ा सा वीडियो इसमें एडिट करी है, जिससे आपको पूरा फंक्शन में एक छोटे से टाइम पीरियड में एक छोटा सा ब्लॉग बना के आपको दिखा सकता हूँ। और ये अब घर से बारात चढ़त हो रही है। इस समय हम घर से अब मंदिर के लिए जा रहे हैं, मंदिर जाएंगे बारात चढ़ाते हुए, और वहाँ पे कुआं पूजन होगा। उसके बाद बारात लेके हमें बिसौली जाना है। ये बरेली में नेकपुर में ललिता देवी मंदिर है। वहाँ पर एक है जहाँ पर सभी लोग बारात जाते हैं। इस मंदिर को
तो गाइस अब हम सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों से निकल चुके हैं बारात लेके बिसौली, जो कि बदायूं के जनपद में आता है। तो हम लोग जा रहे हैं बिसौली बारात लेके, जल्दी से वहाँ जाते हैं, बारात चढ़वाते हैं। आप देखिए पूरा फुल ब्लॉग एंजॉय कीजिए जरा। मेरी लाइफ की सबसे गजब और ख़तरनाक शादी यही रही कि पूरी बारात इतनी तेज़ आंधी तूफान में पूरी करवाई। आप देख सकते हैं इस समय क्या कंडीशन है, सब लोग भागने में लगे हुए हैं। तो गाइस सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको ये ब्लॉग। घोड़ी बग्गी सब बंद हो चुका है। अब हम बारात लेके पहुंच चुके हैं लड़की वालों के घर के बाहर। तो वहाँ पे तिलक हो रहा है, तो बग्गी से उतर नहीं सकता इस समय दूल्हा। आप देख सकते हैं कि बारिश बहुत है, तो सब लोग बग्गी पर आगे तिलक करेंगे। उसके बाद हम सीधे वहाँ पे सारा इंतजाम। तो अब बरेली जाते हुए वापस घर विदा हो चुकी है। सुबह मॉर्निंग का 7 बज रहा है। अब हम लोग वापस जा रहे हैं बरेली। सो आप एंजॉय कीजिए ब्लॉग को, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें कि कैसी लगी आपको ये बारात।